Hello everyone in the Ansarkari, and today we are going to cover the part 5 of the Indian Constitution in detail about the Council of Ministers and the Prime Minister, which is the highest political office of Indian Republic. So before we delve into the functional aspect, I would like to highlight here that the part 5 and particularly the 4 articles of Indian constitutions, they define the parliamentary system, which is the core part of Indian Republic, and number 2 is a part of basic structure of Indian Constitution, also timely highlighted by various institutions of judicial system in India. So we have the Council of Ministers and the Prime Minister. So the term is written here is executive. So what does this signify? This signifies that the legislative aspect, which is represented in the form of Indian Parliament, that Indian Parliament cannot effectively implement all the laws unless and until there are some monitors in those parliamentary groups. There are some leaders. There are some individuals on which the higher responsibility is given. So we can understand in a very simple manner that the Council of Ministers and the Prime Minister, though are the parliamentarians, but are the leaders of the parliament whose responsibility is to implement the collective will which is represented in the bills duly passed by the parliament via discussions, debates, parliamentary committees, and the proceedings. Now it is the time for the executive to implement those laws in public and to bear the criticism and then effectively reach out to the public, to the common man, so that the governance can take place. So now the very first article we have is Article 74. Article 74 says two things. Number one, that there shall be a council of minister, कि ऐसा एक ग्रुप होगा पार्लियामेंट के अंदर जिसमें मिनिस्टर्स होंगे और ऐसी एक काउंसिल होगी मिनिस्टर्स की, जिसमें एक ऐसा होगा जो हेड करेगा पूरी काउंसिल को भी, ताकि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर आए तो उनको भी सुप्रीमेसी के साथ डील किया जाए. So that is the Prime Minister who heads this Council of Ministers and aid and advise the de jure ruler of India, that is the President. And it is the responsibility of the President of India to act in accordance with such advice. But by a 44th Constitutional Amendment Act 1978, we have the amendment in this line, and that this line is in continuation like this, that Council of Ministers, which comprise Prime Minister as the head, will give aid and advice to the President on the basis of which President has to act. But post 1978 44th Amendment, it also says that President can require the Prime Minister and the Council to reconsider that advice and will act in accordance with reconsidered advice. यानी आप रिकंसिडरेशन के लिए भेजिए और रिकंसिडरेशन के बाद जब आपके पास एडवाइस आती है तो आपके लिए कंपलसरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है उस चीज को मानना. दूसरी चीज यहाँ पर क्या कही गई है कि ये जो एडवाइस है आर्टिकल 74 के अंदर दूसरा प्रावधान है कि जो एडवाइस है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देती है, दैट विल नॉट बी इंक्वायर्ड or even entertained by any court of India. Why so? Because if this will happen, then it will degrade the position, the prestige, the privileges of the parliamentarians and particularly the Council of Ministers. Then we have Article 75. Article 75 says number of things. Number one, it says that the President of India will appoint the Prime Minister, and the Prime Minister will give advice to the President on every matter. So this is number one clause of 75 clause 1. 75 clause 2.
which is added by 91st Amendment Act 2003. It says the total number of ministers in your council, including the PM, shall not exceed 15% of the total composition of the Lok Sabha. And this is again to determine the strength of the Council of Ministers and to prevent the politicization of the council. Because in the early years, we have seen that most of the MPs who were very much affluent on the basis of their muscle power, on their money power, on their support power, they were exercising their willingness to join the Council of Ministers, and there were a number of conflict of interest when this council was becoming like elephantine. So to derail this malpractices in the council, the 91st Amendment Act of 2003 was brought, and this determined the limit, and that is 15% of the total composition of the Lok Sabha, not the Rajya Sabha, only the Lok Sabha. So this is 75 clause 2. Now 75 clause 3. It says that any member of both the houses or any party, if it is disqualified under anti-defection law, which is mentioned in 10th schedule of the Indian Constitution, he will be disqualified to be appointed as a minister. Now this is to ensure the fairness and the merit in the minister's CV or the resume, we can say, that there should not be any criminal record. This is also added by 91st Constitutional Amendment Act 2003. Article 75 clause 4, it says that ministers of all the ministers of the council shall hold office on the pleasure of the president, which signifies that president can anytime can remove the council of minister, can anytime remove the minister, can anytime remove the minister from the council. But there are some exceptions here, there are some restrictions here as far as the president office is concerned. Then Article 75 clause 5, it says that the council is collectively responsible to the Lok Sabha. Now this clause of Article 75 is in itself is a very much broad part of basic structure and the silver lining, not only for the parliament but also for the judiciary, to determine how the president, how the prime minister, how the judiciary will work, how the separation of power will ensure, how the republicness in India will be maintained. Article 75 clause 6, it says that it is the president of India who will administer the oath of office and secrecy to a minister. एवरी मिनिस्टर जब भी हम देखते हैं कि जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन यहाँ पर हम प्रैक्टिकल में हम ये नहीं बोल सकते कि प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसी इंडिविजुअल को. आर्टिकल 75 clause 7, it says that if there is a minister who is not a member of parliament, either house, can he becomes a minister? So under Article 75 clause 7, yes, he can become minister, even the prime minister, provided that he proves his membership of any house within the period of 6 months. If he is able to do so, then he is qualified to hold that post post 6 months period. And the last clause of 75 article is 75 clause 8. It says that salaries and the allowances of the ministers is not determined by any executive. It will be only determined by the Parliament of India. Why so? Because this is again a check and balance on the executive. This is a check and balance on the topmost leadership of the country by the parliament, by the common man who are represented in the houses, who are coming via the direct election. So this is Article 75 in detail. If we look at this Admin Reform Commission 1966, which is the very first ARC, it recommended sealing in the strength of Council of Ministers, which was duly considered and incorporated by the 91st Constitutional Amendment 2003, which provided 15% sealing of the total membership of the Lok Sabha. It is mentioned here that By Council whom? is a constitution. Yes. First ARC Commission 1966 by whom? Who was the chairman or
Chairperson, if you can throw light, otherwise kindly note. Sure, sir. So I think, sir, first ARC chairman was Shri Morarji Desai, who was the Prime Minister of India. And I think the Deputy Prime Minister also participated. So this I can, in the meantime, tell K. you. Hanumanthia. Okay, thank you so much. That means Morarji Desai was not, K. Hanumantayya sir was there. Am I right? So first, Pravesh, can you play? First was Morarji Desai Morarji was there. Desai itself, After but that, because K. Hanumanthia. Okay. Thank you. Thanks to all of you. so it is mentioned here that Council of Ministers is a constitutional body, but the cabinet is an extra constitutional body. So what does this signify? It simply means that Council of Ministers is the term which is used in the Constitution, which is defined in the Constitution, but the cabinet, which is not even defined, not even mentioned in the original Constitution, but mentioned later on when we have the 44th Constitutional Amendment Act, 42nd Constitutional Amendment Act, where the emergency we have seen. So there onwards, we have used the term cabinet in the Constitution. So we can say that it is just mentioned now these days, but not even defined. So Council of Ministers is a constitutional body, but cabinet is not a constitution. It is an extra constitutional body. And Article 352 is the only article, yes, here it is, in which the term cabinet is mentioned. And this was also mentioned during the time of emergency, not in the original constitution it was mentioned. Now, is a cabinet a dictator and omnipotent? So अगर हम बात करें omnipotent, so इसका मतलब होता है the one who is overall powerful, सर्वव्यापी, सर्व जगत में powerful. So this is not the case if we talk about Indian Republic. Why so? It is mentioned here that cabinet enjoys a dictatorial position and is apparently omnipotent, but it's not the case because we have the independent judiciary also. We have the parliamentarian committees also. We have the institution of chairman also, speaker also. So we cannot completely neglect the importance and the significance of those offices when we use these terms dictator and omnipotent. It is mentioned here that what are the reasons of these criticisms, that proximity of the prime minister and the composition of the council. But again, we cannot say that because individual discretion is also, we have seen number of times as far as the council is concerned. We have the kitchen cabinet mechanism also. The cabinet is not omnipotent and cannot function independently due to following reasons. Decisions of the cabinet are not final, have to be approved by the parliament. Yes, this is true. Subject to scrutiny by parliamentarian committees, public accountability. हम जब बात करते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की, तो उसमें भी हम देखते हैं कि किस तरीके से जो पब्लिक कमेंट्स होते हैं उनको एंटरटेन किया जाता है. So we can, in one line, we can say that no, cabinet is not a dictator and omnipotent, and we have the proper checks and balance in the Indian Constitution. And if anyone say that cabinet is a dictator in India, so that is a violation of Indian Constitution, which is prescribing the way for republicness, the democratic principle where the parliamentary sovereignty is supreme. And before we go down, I would like to highlight the left out two articles which are considered as very important as far as the Central Council of Ministers is concerned, which we are talking. So the next article is Article 77. This is also signifying that how the beauty of Indian Parliament will be signifying throughout the world. Number one, it says, Article 77, Clause 1, it says, every executive action of Government of India will be taken in the name of President. Article 77, Clause 2 says that when you are taking every decision in the name of President, you might do some mistake. Now, what is the rectification measure for that? So the measure is, President will tell you how and in what mechanism you have to use my name
when you are implementing law, when you are making law, when you are giving executive decision. So in the name of president, so president will authenticate the manner, the procedure, and the substantive aspect in which the whole machinery will work. And the last clause of Article 77, it says that president will make rules for the convenient transactions of the business of the government of India and allocation of portfolios among the ministers of the said business. इसका मतलब ये है कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी इफेक्टिव फंक्शनिंग होगी, ये भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बताएंगे, ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं बताएगी, ये प्रेसिडेंट ही बताएंगे. बट वी हैव इन द प्रैक्टिकल under Article 75, the aid and advice, which is of the Prime Minister itself, not the President. और हमने देखा कि किस तरीके से 44th Amendment Act 1978 के अंदर भी ये बात की गई कि the time you make ordinance, the time you implement emergency, the time you do anything, your satisfaction is not your satisfaction, President of India. Your satisfaction is a satisfaction of the Council of Ministers headed by the PM. If they are not satisfied, you do anything, you will not be considered as satisfied. And this article is not degrading the position of the president, but is highlighting that how the parliamentarian democracy is very much important in India, unlike the US and the other countries where the president supremacy is considered above the parliamentary supremacy. Then the last article in this series, we have Article 78. It says what are the duties of the Prime Minister. So number one, he is the important and the supreme channel between the parliament and the president's office. We can say that he is a linkage between both the bodies. Timely and on the demand of the president, he provides him the reports over the legislative matters, over the administrative matters, over the decisions of the councils, over the appointments of the officers, over the appointments of the judges. Every important aspect as far as the governance of India is concerned, the President of India will get such kind of information from the Prime Minister, and it is a duty of the Prime Minister to do so. And the reconsideration part is also a little bit mentioned in the clause 3 of Article 78, which says that if any matter to be reconsidered, so President will not beg the Council. President will just simply pass on this information to the Prime Minister that Prime Minister, it is your responsibility that you will ensure that the matter is duly reconsidered and then come to me, and then I will give the assent to that bill or to that decision. So I think some information is not available here. So I'll use my information which I have. So if we talk about ministers, so the very first thing comes in our mind is the appointment, that how they're appointed. So before we go on the questions, we can talk in detail about the various aspects as far as the ministers are concerned, because we have seen the number of questions these days coming in the prelims as well as the mains exam. So जो ministers होते हैं वो appoint किए जाते हैं president के द्वारा on the aid and advice of the prime minister, जो कि हमने देखा article 78 के अंदर बात की गई. A minister who is not a member of either house, like prime minister, can be appointed as a minister, but provided he proves his membership in any house within the 6 months. आप बाई इलेक्शन से आइए, आप नॉमिनेट करवा करके आइए, आप इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन होने वाला है आप जैसे मर्जी इलेक्शन करवा के आइए, आपको 6 महीने के अंदर अंदर आपका नॉमिनेशन जो है या फिर आपके जो मेंबरशिप है हाउस की वो आपको फुलफिल करनी होती है. एज वी हैव सीन इन द केस ऑफ श्री एस जयशंकर, हु इज करंटली द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इसके बाद जो मिनिस्टर होता है, अगर वो किसी एक हाउस का है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा भी है कि कोई भी एमपी या कोई भी मिनिस्टर सिर्फ एक ही हाउस में मेंबर हो सकता है, दोनों हाउस में मेंबर नहीं हो सकता. तो अगर किसी भी हाउस से है तो मिनिस्टर को ये अलाउ है कि वो दोनों हाउसेस के अंदर जाके बातचीत कर दे. दोनों हाउसेस की प्रोसीडिंग्स के अंदर बैठने का उनको अधिकार होता है. दोनों हाउसेस के अंदर जो मैटर डिस्कस हो रहे हैं उनको डिस्कस करने का अधिकार होता है. लेकिन
दूसरे हाउस के अंदर आप वोट नहीं डाल सकते, ये चीज आपको अधिकार नहीं। अगर हम अपॉइंटमेंट के बाद आए, तो अपॉइंटमेंट के बाद बात आती है ओथ की। तो इनकी ओथ क्या है? पहली ओथ होती है कि आपको भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर विश्वास और कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करनी है। फेथ एंड एलिजियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन, सोवरेनिटी इंटेग्रिटी आप रखिए कंट्री की, फेथफुली डिस्चार्ज कीजिए अपनी ड्यूटीज को। सच्ची श्रद्धा, आप कह सकते हैं सच्ची श्रद्धा और विश्वास। जी। और हर किस्म के इंसान को, चाहे वो किसी जाति से आए, किसी कास्ट से आए, किसी धर्म से आए, किसी रेस से आए, ऑल मैनर ऑफ पीपल के लिए आप जो डिसीजन है, वो जो आपका ऑफिस आपको दिशा देता है, आप वो डिसीजन लीजिए। अपना पार्टीशन, अपने प्रिजुडाइसेस आप उसमें इंटरवीन ना कीजिए। और आपको जो भी डिसीजन देना है, एज फार एज द लॉ इज कंसर्न, विदाउट फियर फेवर, विदाउट अफेक्शन और इल विल, यानी प्रेम मत दिखाइए, द्वेष भी मत दिखाइए, आप इल विल भी मत रखिए किसी के लिए, किसी से डरिए भी मत, और किसी का फेवर भी मत कीजिए। सो दिस इज द ओथ ऑफ एवरी मिनिस्टर of the union government defined under article 5 and defined under part 5 of Indian constitution. जब हम बात करते हैं सेक्रेसी की, तो गोपनीयता, तो गोपनीयता किस तरीके से मिनिस्टर्स को रखनी है और क्यों रखनी है? क्योंकि जो जिम्मेदारी है वो इस तरीके की है कि उनको गोपनीय रखना जरूरी होता है। तो ओथ ऑफ सेक्रेसी के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको किसी भी इंसान को, अपने घर वालों को भी कम्युनिकेट नहीं करना है कि आपके ऑफिस के अंदर क्या मैटर है। You will not directly or indirectly communicate to reveal to any person any matter that is brought under your office, that is brought under your consideration as a minister. यानी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस चेयर को आप संभाल रहे हैं, उसकी एक सेक्रेसी है, और उसको आपको अपने तक रखना है, अपने ऑफिस तक आप उसको रखना है, और उसको ड्यू डिस्चार्ज करना है। किसी के साथ कोई गलत ना हो, जस्टिस हो, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, और रिपब्लिकनेस को आपको होल्ड करना है। ये आपके ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी की जो है वो ओथ है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब अपॉइंटमेंट हो गई, ओथ भी ले ली, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? तो सबसे पहले, एज अ मिनिस्टर, एज अ नॉर्मल मिनिस्टर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि प्राइम मिनिस्टर को हर चीज की जानकारी देना, जो आपने अपना पोर्टफोलियो आपको असाइन हुआ है उसको श्रद्धा से उसका पालन करना, आपके मिनिस्ट्री की या जो आपको डिपार्टमेंट असाइन हुआ है उसकी इंटरनल फंक्शनिंग आपको देखनी है, उसकी जो टाइमली रिपोर्ट प्रेसिडेंट को जाती है वो आपको प्रिपेयर करवानी है। और यहाँ पर आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप सही से नहीं निभा पाते हैं, तो आपके जो लीडर हैं काउंसिल के, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आपको किसी भी टाइम, किसी भी रीजन के ऊपर आपको बोल सकते हैं कि यू आर नॉट द पार्ट ऑफ काउंसिल, एंड ही विल गिव दैट रेजिग्नेशन लेटर, not from your permission, but on his permission to the president. And in case the president signs that, then you are disqualified and you are out of the game. As far as the collective responsibility is concerned, तो collective responsibility के अंदर कुछ ऐसे प्रावधान हमारे यहाँ हैं जिसको क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। हम देखते हैं क्या है। नंबर 1, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपनी जो काउंसिल है उसकी कंपोजिशन, उसकी मेंबरशिप लोकसभा के हाउस पे हमेशा मेजोरिटी के साथ रखनी। अगर वो आप नहीं रख पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपके लिए खतरा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे ही पास होता है, आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और आपको डिसॉल्व, आपका हाउस भी डिसॉल्व होने की कगार पे आ जाता है। इसके बाद जो भी आपकी एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेती है, चाहे वो गलत हो सही हो, आपको इंडिविजुअल डिस्क्रिशन का नहीं देना है। जो बताया गया है उसको सपोर्ट कीजिए, आप पर्सनली कमेंट कीजिए, पर्सनली बात कीजिए, लेकिन आप पब्लिकली नहीं कह सकते कि मेरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो डिसीजन लिया मैं उसके अगेंस्ट हूँ। इन केस यू डू सो and your council of minister do not like, then you are again will be resigned by the president. तो यहाँ पर this is a criticism that even in the RPA 1951 such kind of matter are not taken into account, because this, we can say, minimizes the individual's importance
of an MP to cast his vote, to discuss any matter, and to provide his assent or withdrawal on any assent within the main course of the parliamentary proceedings are concerned. So इसमें हमने देखा कि जहां पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ऐसा बोला जाता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन साइलेंट ऑन द इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस ऑफ एन एमपी। इसके बाद जो आई वुड लाइक टू आस्क कि जो Yes. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके कोई ड्रॉबैक्स या फिर चैलेंजेस फेस किए जाते हैं? इट्स अ नाइस क्वेश्चन। तो दोनों है। इसके फायदे हम देखते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसीजन लेते हैं वो टाइमली इंप्लीमेंट हो जाते हैं, लेकिन इसका नेगेटिव फॉल आउट क्या है कि जल्दबाजी भी हो जाती है, और फार्म लॉ जैसी हमने देखा कि उनको प्राइम मिनिस्टर को आकर वापस लेना पड़ा, उसके लिए उन्होंने पब्लिक में मीटिंग भी की, क्षमा भी मांगी। दूसरा ये कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आप जो है वो कलेक्टिव विजडम को भी दर्शा रहे हैं कि हो सकता है मेरी इंडिविजुअल जो मेरी समझ है वो किसी कानून के ऊपर, किसी एग्जीक्यूटिव डिसीजन के ऊपर इतनी ना हो, क्योंकि अगर 15% लोग में से 14% लोग सपोर्ट कर रहे हैं किसी चीज को जो एग्जीक्यूटिव ने डिसीजन लिया, और 1% के अंदर मैं आता और मैं ही नहीं कर रहा, तो हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अपनी चीज को रिकंसिडर करने के लिए, हो सकता है मुझे ही रेक्टिफिकेशन की जरूरत हो। तो हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब हम पार्लियामेंट के कॉम्पोजिशन की भी बात करते हैं तो बात है यूटिलिटेरियनिज्म, बात है मेजोरिटेरियनिज्म, यानी सर्वसम्मति, यूनैनिमस डिसीजन को ही हमेशा सपोर्ट किया गया है। इंडिविजुअल जो डिसीजन है उसको कंसीडर हमारे यहाँ किया जाता है, लेकिन उसको हम कलेक्टिव विजडम के नीचे ही मानते हैं। ये वही बात है कि इंडिविजुअल और सोसाइटी के जो फ्रीडम है उसके हम देख सकते हैं कि आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम सही है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जहां बात आती है सोसाइटी फ्रीडम की, जहां बात आती है मेजोरिटी इंटरेस्ट की, तो वहां पर जो यूनैनिमस डिसीजन होगा वो ही लिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर देखा गया, जैसे अभी मैंने कहा कि इंडिविजुअल जो डिसीजन होता है या फिर इंडिविजुअल की जो विलिंगनेस होती है, जो विश होती है, कई बार हमने देखा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर वो पूरी नहीं हो पाती है, लेकिन कलेक्टिव विजडम के रहते उसका ये भी होता है कि टाइमली उसको भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है किसी दूसरी तरीके से। उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि डिफाइंड अंडर आर्टिकल 44 डीपीएचपी के अंदर, हमारे दिल्ली में रहने वाले जो पार्लियामेंट प्रीमाइसेस के अंदर रहते हैं, एक हमारे एमपी हैं, और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के डी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भी हैं, इकोनॉमिक्स के। उनका कुछ राजकुमार सिन्हा नाम है। उन्होंने कहा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर पार्लियामेंट्री कमिटीज के अंदर कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बिल लाइए, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उन्हें कहा कि अभी ऐसे माहौल नहीं है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाए और इसको इंप्लीमेंट करवाएं। तो उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बाहर आने का डिसीजन लिया, और एज एन इंडिविजुअल एमपी, जब हम बात करते हैं कि दो तरीके के कानून बिल पेश किए जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, गवर्नमेंट बिल और इंडिविजुअल बिल, तो उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल अपनी ही पार्टी की काउंसिल से बाहर आकर के, और उन्होंने वो बिल खुद कॉन्स्टिट्यूट करके पार्लियामेंट के अंदर रखा, राज्यसभा के अंदर, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। तो इसमें हम यही देखते हैं कि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहां पर एक फायदा और है कि आपका डिसीजन पास हो जाता है, लेकिन प्राइवेट अगर आप कोई बिल बनाते हैं तो उसको गवर्नमेंट बिल का कैटेगराइज किया जाता है, वो जल्दी पास होगा, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल है तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल होगा, 2 ही दिन हफ्ते में डिस्कस हो सकता है, या तो सोमवार को होगा, शुक्रवार को होगा, गवर्नमेंट बिल किसी भी दिन हो सकता है। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि नेगेटिव फॉल आउट कहीं ना कहीं कम है, और जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के वो ज्यादा है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर, जैसा करुणा जी ने बोला कि अगर कोई नेगेटिव फॉल आउट है, कोई इंडिविजुअल एमपी है और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट भी है, inconvenience. So we were talking that if an individual MP who is a part of Council of Ministers, so is having any sort of portfolio as a state minister, as a union minister, but if he says that
Prime Minister, sir, and the Railway Minister, sir, I am not having the similar kind of willingness to support this bill which you are presenting in the parliament. And I have disagreement with this bill. So in case he proposes such kind of idea, it is the responsibility of that MP to resign immediately. Otherwise, the Prime Minister will make him resign. So अगर आप individual willingness दिखा देते हैं और दिखाने के बाद आप उसको सपोर्ट भी कर देते हैं, तो आपको रिजाइन ही करना पड़ेगा. ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. यानी यू मस्ट हैव टू रिजाइन इन केस यू आर नॉट सपोर्टिंग द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर when you are the part of the council of ministers and there is no remedy available. आप जाएंगे, कोई और तैयार है मिनिस्टर बनने के लिए. इसके बाद हम देखें कि जैसा कि ब्रिटेन में है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, तो क्या इंडियन जो मिनिस्टर्स हैं उनकी भी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देयर इज नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सारी चीजों को साइन करते हैं. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर ही डिसीजन लिए जाते हैं. तो फिर मिनिस्टर्स लीगल रिस्पॉन्सिबल क्यों हो? इसका सिंपल सा फैक्टर इतना है. तो यहाँ पर देयर इज नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज फार एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कंसर्न. अब हम बात कर लेते हैं, वी हैव जस्ट 7 minutes लेफ्ट. सो इन ब्रीफ, व्हाट इज द डिफरेंस between the council of minister and the cabinet? And before that, I would like to highlight some more information regarding the composition of the council of minister, because it is very important and the prerequisite to understand the cabinet. So council of minister में जब हम देखते हैं बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं. 15% आप मान लीजिए लोकसभा की स्ट्रेंथ का, तो 500 लोग होते हैं एमपी और 15% उसका मान लीजिए. तो उसमें किस किस तरीके के मिनिस्टर्स हो सकते हैं? पहले के टाइम पर जब इंडिया नया नया कॉन्स्टिट्यूट हुआ, तो हमने देखा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे और उन्हीं के अंदर कैबिनेट होती थी. लेकिन अभी जब नई नई जब काउंसिल बढ़ती चली गई, तो उसके बाद काउंसिल के अंदर ही एक तरीके का विद्रोह हुआ कि मिनिस्टर्स बन गए. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर सबको अगर मिनिस्टर बना दे, तो इतनी तो मिनिस्ट्री ही नहीं है, तो कैसे बनाएंगे? तो फिर हुआ ये कि एक रहेंगे हेड ऑफ द मिनिस्ट्री, जिनको बोला जाएगा यूनियन मिनिस्ट्री के हेड, और एक होंगे उनके नीचे जिनको बोला जाएगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट. और उनके भी नीचे जो है आज के टाइम पे कई डेजिग्नेशन हैं, जैसे कि डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री, या डेप्यूटी से भी नीचे हो जाते हैं आज तक. तो ये इसीलिए है ताकि मिनिस्टर्स की जो वर्क प्रोफाइल है उसको एमपीज को प्रोफेस करवा के देखा जाए. मतलब अगर आप हम कह सकते हैं कि देयर इज एमओएस विद इंडिपेंडेंट चार्ज एंड एमओएस, दे आर देयर. So you have union minister, yes, we have minister of state three with independent nomenclatures. charge, and a minister of state. That's all. Yes, so we have these nomenclatures which are just mentioned beautifully, and the cabinet ministers is the core part of the council. Cabinet ministers are those ministers who are the head of the ministries, जिनको हम जानते हैं north block, south block. These north blocks and south blocks on the Raisena Hills lane, they are not the blocks, they are not the normal offices, they are the ministries. Home Ministry, Finance Ministries, these are the ministries. And the cabinet ministers are the head of these ministries. Union Home Minister Shri Amit Shah is the head of the Ministry of Home Affairs. So he's the cabinet minister of home. But below him, we have another home minister, that is the state home minister of India. He's not the minister of any state, Haryana, Punjab, not that. He is a state minister of all India. And then we have the deputy ministers also, that is the third nomenclature, deputy ministers who are even below the minister of state. So cabinet minister को बोला जाता है जिनके पास full responsibilities, full decision making power होती है, और इनके नीचे इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट को, जो कि असिस्ट करते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को, और उनके नीचे जो होते हैं डेप्टी मिनिस्टर्स, वो असिस्ट करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट. देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट के बीच में डिफरेंस. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक वाइडर बॉडी होती है, हमने देखा 70 से 80 लोग भी इसके अंदर आ सकते हैं, 15% मेंबरशिप ऑफ द टोटल हाउस कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा. अलग अलग तरीके के नॉमेनक्लेचर्स के मिनिस्टर्स होते हैं, जिसमें हमने देखा कैबिनेट, स्टेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर. इसके बाद ये एक साथ
नहीं बैठते हैं, लेकिन इनको बोला जाता है कि एक साथ है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास प्रैक्टिकल और इम्प्रैक्टिकल पावर्स हैं। जैसे कि प्रैक्टिकल पावर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रैक्टिकल पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। लेकिन जो थ्योरी में पावर है, यानी जो किताबी जो पावर है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है, और प्रैक्टिकल पावर कैबिनेट के पास। इसके बाद हम देखें कैबिनेट, तो कैबिनेट छोटी बॉडी होती है, इसमें 10 से 15 से 20 लोग मैक्सिमम होते हैं, और इसके अंदर जो होते हैं वो सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट मिनिस्टर डेप्यूटी मिनिस्टर नहीं होते। यानी कैबिनेट के अंदर सिर्फ कैबिनेट, कैबिनेट ही होती है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम पर कलेक्टिव डिसीजन लेती है। कैबिनेट ही होती है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम पर मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट करवा के मीटिंग ले लेती है, डिसीजन ले लेती है। ये कैबिनेट ही होती है जो सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पावर को एक्सरसाइज करती है। ये कैबिनेट ही होती है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सुपरवाइज करती है। तो अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहीं ना कहीं छोटी होती है कैबिनेट से, लेकिन जब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बड़ी होती है कैबिनेट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जब हम देखा आर्टिकल 74, 75, 78 इनके अंदर ये डिफाइन है। और जो कैबिनेट है वो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 पोस्ट द इमरजेंसी, आर्टिकल 352 इमरजेंसी कैसे लगेगी, तो कैबिनेट का डिसीजन होगा। यहाँ पर जस्ट ये कैबिनेट वर्ड यूज है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाती है लोकसभा की, और जो कैबिनेट है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाती है दोनों हाउसेस। क्यों? क्योंकि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो दोनों हाउसेस से हो सकते हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर भी दोनों हाउसेस से हो सकते हैं। लेकिन बात यह है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो लिमिट है, जो सीलिंग है, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोकसभा से ही दिखाई जाती है, दैट इज 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। सो for today we can wind up here, and we are hoping that in the next course of case we are going to complete as far as the union council of ministers chapter is concerned. So thank you so much and keep watching Ansakari. Stay tuned with us. Thank you so much.